A very good evening to all of you. Can you hear me? क्या आप मुझे सब सुन सकते हैं? ओम शांति आप सबको. Very good evening. Participants will keep on joining, but we are going to go ahead and I will request everyone to kindly mute yourself so that we can go ahead with the beginning and we can start the session as soon as possible. So if everybody is able to hear me, kindly give me a thumbs up from your reactions. Wonderful. Thank you, Tulsi. Thank you, Lal Thapa Bhaiji. As people join up, we'll go ahead with the sessions. So without wasting any more time, welcome back to another session. I think we are on the 4th session over here now. चौथे सेशन में पहुंच चुके हैं and बहुत ही शानदार सेशंस हो रहे हैं हमारे. पिछले सेशन में हमारे साथ में शिव नेहा सिस्टर थी and हमने बहुत कुछ सीखा उनसे and डिमांड थी लास्ट टाइम कि शिव नेहा बहन जी अपने और भी गहरे परमात्मा के वचन जो है वो आगे रखें for godly help, for making the world a better place and for improving the condition of the world. So I can see over here Shivneha Bhanji, thank you so much for joining in. Bishal Sitaula Saab, Professor, thank you so much for joining in. That's wonderful to see you over here, great personalities amongst us today. And we'll be introducing Mr. Bishal Sitaula, Professor Saab, very soon. So first of all, what we do before we start our program is we take just 30 seconds of silence and उसमें हम थोड़ा सा meditate करें and परमात्मा को, अल्लाह को, जिहोवा को, supreme light, energy, metaphysical energy, quantum field, जो भी आप कहना चाहें आप उनको याद करें
And let's remember him for a few seconds, 30 seconds. Let's remember Supreme Creator. वेलकम बैक, आप सब फिर से स्वागत है। एंड 30 सेकेंड्स ऑफ मेडिटेशन, आपने जो जो सीखा लास्ट टाइम के सेशन से, ये सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन जो हमारा सेशन हो रहा है, ये एवरी सैटरडे हो रहा है, आप सबके लिए हो रहा है। एंड जिसको इससे लाभ उठाना है वो हमारे साथ ज्वाइन करते जाएंगे। आज काफी सारे लोगों का मेरे को मैसेज भी आया, सॉरी आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन टुडे, किसी को कफ हो गया, किसी को कोल्ड हो गया है, कोई बर्थडे पार्टी पे गया है, दैट्स ओके, बट वी आर हैविंग दीज सेशंस एवरी सैटरडे। हम हर सैटरडे को सेशंस कर रहे हैं, और ये सेशंस का मेन पर्पस यही है कि हम वर्ल्ड रिनाउंड हस्तियों को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, और जो इस स्पिरिचुअल फील्ड में भी हैं और स्पिरिचुअल फील्ड से ताल्लुक भी रखते हैं, उनको भी हम इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, और उन सब से हम उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू बहुत कुछ नया नया सीखें। तो आज वैसे उसी तरीके से हमारे साथ में आज हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर बिशाल सिताउला साहब हैं हमारे साथ में, जो कि नॉर्वे में, वैसे उनकी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस, अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो 5 मिनट लग जाए मुझे, लेकिन मैं शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर बिशाल सिताउला साहब हमारे साथ में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडीज, नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेस, NMBU से हैं। पिछले 32 इयर्स है उनके पास में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इन रिसर्च, बहुत ही बड़ी उपाधि है, टीचिंग एंड कोलैबोरेशन, और साथ साथ उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स जैसे इकोलॉजी, ग्लोबल चेंज इश्यूज, हायर एजुकेशन, कन्फ्लिक्ट, पीस एंड डेवलपमेंट, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड भाई साहब ने चूज किया अपना टॉपिक्स भी, कन्फ्लिक्ट, पीस एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग विजडम एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको चूज किया है। और वे अपने नॉर्वेजियन बेस से वहां पर रहते हुए उन्होंने लीडिंग मल्टीनेशनल प्रोग्राम्स भी किए हैं बहुत सारी कंट्रीज में। कुछ कंट्रीज के नाम लिया जाए, इथियोपिया, केनिया, तंजानिया, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बोस्निया एंड ऐसे ही मालवी, बहुत सारी कंट्रीज में उन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं, और कंट्रीज ने उनको बुलाया भी है अपने कंट्रीज की सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के विद हिज एक्सपीरियंस। And he has also contributed in several universities, PhD programs, 25 PhD programs run किए हैं भाई साहब ने, and he has been cited 3,813 times for various articles and for editing different books. भाई साहब आपकी इंट्रोडक्शन बहुत लंबी है, मैं छोटे में ही बोल रहा हूँ क्योंकि आगे मैं लेके नहीं आ पाऊंगा, बाकी आपसे सुनना चाहेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। फ्रॉम नाउ वील गो अहेड विद 30 मिनट्स ऑफ योर सेशन। भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, लेट्स हियर फ्रॉम द मेन स्पीकर ओवर हियर। Om Shanti. So it is a great honor and pleasure for me to be a part of this big happy family, Brahma Kumari, and also I would like to extend my heartfelt gratitude to the organizer in Darjeeling and self-healing meditation group. It is always a great joy for me to really join this kind of group in my career. हम जैसे नॉर्वे में जो आधी रात में सूर्य देखने वाला देश है, उसमें कई सालों से रह रहा हूँ, फिर भी मेरी जो अनुभव है इंडिया, जहाँ पर मैंने जिंदगी की 5 साल, बहुत सुनहरा 5 साल बिताए थी, उसी टाइम में मेरे को ब्रह्म कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनने का मौका मिला था बैक इन 1982।
Since then, I have been with it, and a focus attention type of meditation given in Brahma Kumari really helped me to grow and flourish in my life. इसीलिए मैं दादी संदेशी, Sister Kusum, and many other sisters afterward, I would like to extend my heartfelt gratitude to them. Today, I am going to share my insights and my own creative interpretation of reality around what is happening in this rapidly changing world, which is wounded and squeezed from very many different directions. And secondly, I will also bring the idea that how our wisdom tradition from the East is becoming increasingly relevant for addressing this global crisis today. And then for that, a transformative thinking, a shift in cognition and consciousness is required. ये जो सोच परिवर्तन के विज्ञान है, उसको भी मैं एज ए प्रोफेसर, एज ए सो कॉल इंटेलेक्चुअल, क्योंकि मैंने वही भाषा सीख के रखी है, अगर मेरी बस में होता तो मैं भी ब्रह्म कुमारी के सिस्टर्स, दादी जैसे मीठी मीठी बात करना ही चाहता हूं, क्योंकि वो सिंपल है, प्रोफाउंड है, एंड दैट रीचेस डायरेक्टली टू आवर हार्ट. बट हमारा ट्रेनिंग ही ऐसा है, क्या करूं. ये प्रोफेसर लोग है ना, बहुत ड्राई एंड डिजर्टेड होते हैं. अगर रियलिटी भी सिंपल भी हो, हमने अफ्रीका में बहुत साल काम किया, इधर यूरोप में बहुत साल पहले की बात है. एक इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर ने भी उधर काम कर रहा था, एक स्कैंडिनेविया, कहीं मैं नाम नहीं लूंगा. 5 साल के रिसर्च के बाद, दैट वाज इन इथियोपिया, उनका जो रिसर्च का फाइंडिंग का वन ऑफ द कंक्लूजन ये था कि पुअर पीपल जनरली हैव ए लेस अमाउंट ऑफ मनी इन देयर पॉकेट. तो वो तो थोड़ा बहुत बुद्धि लगा के भी लोग को समझ में आ जाता है, इतने बड़ी डाटा, इतना बड़ा हाउस होल्ड सर्वे की क्या जरूरत थी. हम प्रोफेसर लोग ऐसे ही होते हैं. फिर भी विज्ञान है, विशेष ज्ञान है, तो मैं थोड़ा बहुत अपने स्क्रीन शेयर करने की मैं अनुमति चाहूंगा आप लोगों से. देखें कि शेयर होता है कि नहीं. आई होप इट इज, आई एम एबल टू शेयर. So, in my part of presentation today, I am very much really, I mean, after this my dry academic lecture, I am really looking forward to listen to Sister Brahma Kumari Neha. मन उससे पहले मैं थोड़ा बहुत इस संसार में कैसी प्रकार की संकट चल रही है, ग्लोबल क्राइसिस इन इंटरनेशनल एरिना, उसके लिए किस टाइप की जो ज्ञान है, जो insights from our wisdom tradition in the East is relevant, and why we need a shift in both cognition and consciousness today. आप देख रहे हैं कि भाई साहब ने बोला था कि थोड़ा हिंदी ही ज्यादा बोलिएगा. मैं इंडिया में 5 साल तो रहा, मेरा हिंदी भी थोड़ा टूटा फूटा हो सकता है, इसलिए पहले से ही मैं अपने हाथ उठा देता हूं. तो मैं प्रयास करता हूं कि जितना हो सके मैं हिंदी भी बोलूं. So, this world today is squeezed from very many directions. The human footprint is too heavy, and it has created almost like a geological epoch. That means that what happens to world in a million years of time, the human being came to this world and the industrial revolution began in 18th century. And then now we see this kind of artistic, I mean, this is artistic presentation, but we may call it a big disorienting dilemma. ये जिंदगी की ये जो सारा जो सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह है, उनमें से सिर्फ पृथ्वी रो रहा है क्योंकि उधर ह्यूमन बीइंग है. तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रेंड बोल रहे थे कि
If insect disappear from this world, the world will be banished in 5 years because there is no pollination and all this plant will dry out. But if the human being disappears from this world, then the world will flourish. And that is a metaphoric statement, but still very true. अभी देखिए संसार में कई तरह के संकट ही संकट से भरा हुआ है. These are the major wars today, and if you really count all different kind of war, inter and intra-state conflict and major armed conflict, almost 36 to 40 war are going and people are being killed right now in this world today. And these are some of the hot spot that you can see in media every day. In fact, now in Europe there is a crisis, so media is focusing there. But I work in Ethiopia, I work in other country, and I know that there is also a large scale war is going on around the world. So war में होता क्या है? Human destruction, self-destruction. Human being is the only species who is risking his own extinction. भाई भाई एक दूसरे को मार रहे हैं. आप रशिया और यूक्रेन को देखिए. अगर if you go 7 generation backward, उनके मात वो जो अपने जो बुआ और अपने जो ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर एक ही होंगे. एक आपस को मार रहे हैं. छोटे छोटे बच्चे. अभी ठंडी भी आ रही है यूरोप में. बहुत ठंडी होता है. इसमें जब electricity is not there, water is not there, nothing is there, you can imagine the pain and suffering. Right, just it's a neighboring country from Norway here. And when the war happens, since the World War, first there are almost 46 million people have died in this violent conflict. And you can see some of what happens when the war. This fallen person, he must have his wife, he must have his children, must have mother, and he was fighting with another one, which was not truly his enemy. अगर इसी सैनिक ने अगर not in the war zone, but अगर किसी दूसरी जगह में वो जिसको आप दुश्मन वर्ड यूज करते हैं, दुश्मन सैनिक को मिला हुआ तो पूछता कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, प्रेम से पूछता होगा. And because of very bad politics and the proliferation of ego, really, it is the hot bath जिसको कहते हैं. Everybody want to show their muscle and see that they are the power and everybody else has to, and therefore people are dying. And there are other kind of conflict in this world. Just recently, almost 6 million people in the world died because of COVID-19. And you see, I have got the data from just October 2022, 6.58 million people have died. And then almost, more than almost 700 million cases. And that has created a very many disorienting dilemma. And then also there is another issue that from the developing country, many developing countries that I work in Africa, South Asia, and so on, because of the very bad governance, there is out migration of migrant workers. Every day in the country like Nepal, मैं वास्तव में नेपाल से हूँ, तो अभी का statistics है कि every day almost 2,000 or more than 2,000 new youth are migrating to the other part of the world because of desperation. There was a bad governance, no employment, and they have aspiration, and so on and so forth. And what happens is that they have to work in a poor condition in the Arabian world. And then what happens is every day, the statistic says that 5 to 7 dead body of this young migrant worker come back to Nepal only. And what happens to, their wife and their small children when their person who was sending their money is gone? Look at their gloomy, very, very shattered future. And I'm a scientist of international environment and development studies, and this is what I do. And the frequency of extreme weather events, जैसे drought है, flood है, बाढ़ी है, landslide है, the frequency of this has been very much increased, and the projection is that
those extreme weather events that were coming, one event in 24 years or so, now it will be coming every year or every 2 years. And every year when you face this drought, flood, how farmer will cope with this? Already in India and many places, I know that there is a lot of farmer suicide because there is a crop failure, there is a drought, and our part of the world is again rather fragile, because you see from the satellite it looks like this, and then in the India, in Nepal, that part of the world, again other things that is beyond our control, which is not man-made, like earthquake and so on, is also coming, and a lot of death is happening. In Nepal, when there was a major earthquake recently, I was there, and I have seen some of this picture. The village that was like this, in a very peaceful places, just in a moment of 5 to 10 minutes of earthquake, the same village become like this. And you can see the death and destruction. More than 11,000 people died in that earthquake. The other thing is that it is very, very easy to say, yes, I am the peace, Om Shanti, and so on. But bhukha पेट भजन न होए गोपाला, पहले भोजन बाद में भजन जिसको कहते हैं. तो ये जो हमारी मिट्टी है, ये बहुत डिग्रेड हो रहा है. हर एक मिनट में 10 hectares of land is being degraded around the world, and that is also taking away our food bases. You can go on and go on, and then the food prices are going up, and the food insecurity is growing because of the COVID, because of the land degradation, because of the climate change, and so on. And today, the undernourished period around the world, mostly in the Asia, Africa, and Latin America, is almost 768 million people are undernourished. We have to do something about it in order to acquire that inner peace. Mental training is very, very important, very, very essential. But we also need to have other enabling condition that supports our mental training. And there is a cause for the food insecurity, like again the violent conflicts, like what is happening to the Russia and Ukraine now. Because of that, fertilizer prices in Asia and Africa has gone up. Farmer cannot buy it, and then how they can produce the food? And when there is no bhojan, how we can practice our contemplative practices? And on top of that, there are very many other things. I also work very often around the world about the global water crisis, and I don't want to explain more on this crisis one after another. You know that almost because of the desertification has grown, drought has grown, and also the frequency of drought event have been gone, and you see that also creates a water crisis. This photo down there is from Rajasthan, really. And you see that these challenges, in some places, there is a problem of too much water in too short period of time, like in the Gulf and this flash flood event. And in some places, there is a water dries out, and then problem with the water scarcity, and also the quality of water that you can see in our part of the world. Okay, and then this water quality is becoming deteriorated, and then it has an enormous health implication. Every year, really, more than 5 million children under the age of 5, before they can even properly speak, die because of the bad drinking water around the world. So this is the photo that I have taken. Every 2 minutes, that means a child dies from a water-related disease here. These are the actual issue. We who do the contemplative practices, that we are really aspiring for the transformative change in the population, we should also know this ground reality. And also there is a economic recession which is coming with the growth, and then all this is affecting us. I talk about climate change, I talk about the land degradation, all this. For example, increasing temperature, this temperature in the globe has increased by 1.2 degrees Celsius by now. And it is sure guaranteed that by 2030, it will be 1.5 degrees Celsius. And from the ecological perspective, that is a big disaster.
and that is coming back to the human being, because increasing, there are a number of studies that we teach that increasing temperature are associated with more interpersonal violence. जब टेम्परेचर जैसे जो ठंडे ठंडे जगह में थोड़ा ग्रो करता है तो उसे उसका जो स्ट्रेस हार्मोन है उसकी सेक्रेशन ज्यादा होता है पॉपुलेशन में। फिर क्या करते हैं, कोई ध्यान ज्ञान तो कुछ किया नहीं, कुछ काम इस प्रकार के कोई ब्रह्म कुमारी type of training is not there in every places, and they start taking alcohol, and then they start beating their wife, their spouse, and that it has been, there are a number of published works that because of increase in temperature, the violence in the family has also increased, and also increased alcohol and drug use. So the reflection here is that thinking about again in the new नए generation जो यूरोप में है, जो हम पढ़ाते हैं इधर last 30 years से, thinking about the consequences of climate change makes anxious and depressed, which is called ecoanxiety, which is very prevalent among the youth here. The rise in ecoanxiety is a huge problem in the parts of Europe today. थोड़ा सा हम सोचें कि ये सारा प्रॉब्लम जो मैंने बताई, क्राइसिस बताई, एक क्लाइमेट चेंज कोई ले लीजिए, which is governing all this water crisis, land degradation. When there is a climate change, there will be too much rain in a short period of time. इसलिए तो मटी बह के जाता है उधर समंदर में। तो ये सारे चीज देखने जाए, is our mind is a victim of climate change, because increasingly when there is a drought, flood, uncertainty has increased. तो क्या होगा, अपने मन को ही तो दुख लगेगा नहीं कि कैसे जिया जाएगा, इतने लंबे बच्चे छोटे छोटे हैं, कैसे हमारा जिंदगी चलेगा. So mind become a victim of that climate change. And then if you look at from the other perspective, mind is the root cause of climate change. जो 20% पॉपुलेशन जो इधर यूरोप में और जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जो रहते हैं, they are consuming 80% of the world resources, and on all because of the industries and because of a lot of carbon footprint. ये संसार में जो है ये माइंड के वजह से what about me, what about me, what about me, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकारों के कारण जो समस्या है वो माइंड का समस्या है. That is also root cause of this all crisis. And mind is also a barrier of climate change. देखिए world leader like Donald Trump कहता है कि ओ ये तो साइंटिस्ट का ये जो बनी बनाई कहानी है, ये क्लाइमेट चेंज कोई हो नहीं रहा है. तो कोई कहते हैं कि हाँ क्लाइमेट तो चेंज तो हो रहा है, मगर इट शुड बी फ्रॉम द डिफरेंट रीजन, मे बी देयर इज ए चेंज इन द ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ, या चेंज इन द सोलर रेडिएशन. दे गिव ए different explanation and don't want to take the responsibility that it is because of the oil companies. The like here in Norway, we talk quite a lot about the environment of the world, but the main source of income here is also selling the oil from petroleum product from the Northern Sea. And then the vicious cycle of mind and climate change. आप समझ लीजिए कि जैसे नेपाल में डिफरेंट जगह में हमने देखा है, पाकिस्तान में अभी बड़ा फ्लड आया था. When the people are displaced, of course there is immediate anxiety, depression, and in the long run, if you don't handle that, that converts into panic behavior and so on and so forth. And then when people are desperate, they put more pressure on the forest and the natural resource around it very mindlessly, because that's marta kya na karta. So they say there is a vicious cycle of mind and climate change that way. So therefore mind is everything. What you think, you become. I have seen the same wisdom everywhere in our wisdom tradition. Gautama Buddha, he was the crown prince, really prince, I mean crown prince. उसको कोई कमी नहीं था. जब उसने देखा कि छोटे छोटे जैसे वाटर इश्यू के लिए, जैसे जो साक्य लोग है, क्लान है, दूसरी क्लान है, कोल क्या नाम के क्लान है, वो फाइट कर रहे थे एक आपस में. देखा कि वो तो कुछ छोटी चीज के लिए, एक पानी के लिए उस टाइम में भी रगत बहा रहे थे. ये
many Buddhist scholar now tells that Buddha didn't leave the palace just because simply he saw the old man, sick man, and disease man, and death man. Not only because of that, he has seen a lot of conflict around, and he thought that no, life contains suffering, and I need to look at why this suffering do exist, and it's probably because of the poor mental training. Let me go and train my mind and see how that will help me, and then if I am transformed, I am able to transform other. So our life is shaped by our mind. Therefore, in the Brahma Kumari, the World Spiritual University, basically there is a mental training there. We're using some kind of mental model because our mind requires some kind of association. Associated memory is very, very important. A kind of hook, because there are a number of studies which is published in how to build up psychological resilience. Then those people who have some kind of psychological hook, like in the Buddhist doctrine, you need to hook up to Sangha, you need to hook up to Dhamma, you need to hook up to Buddha. Like that in Brahma Kumari, there is a bhava. Then when you hook up with the bhava, and then that kind of insight, creativity, that inner strength, everything comes from there, and then you become resilient. So in the early time, much earlier time, I mean, our Vedic civilization didn't extend so much beyond India, but there was a big proliferation of Buddhism, and in our language, in the language of international relation, this knowledge, this kind of wisdom, we call it soft power, it spread around different part of the world, like Sri Lanka, and I mean, Buddha was born in Nepal, in Lumbini, and then he went to, he got his enlightenment in the Buddha Gaya, and then that becomes a kind of, that time, that become more context responsive than it was going around the world over a period of time. And later on, the same thing has been perceived through Mahayana tradition, Theravada, and also Vajrayana tradition in very many different routes. But now, this earlier thinker, Buddha is a historical person. He is not a mythical person like Vishnu or Shankar or other. He has given a very profound doctrine and also insight and the theory which is relevant for the politics today. According to Buddhist way of knowing the world, then the politics should be meant for liberation from the suffering of all sentient beings, not only the human being, also the animal, but it should begin from the individual. What means that the personal transformation, without a personal transformation, the societal transformation is not possible. And then Buddha also कहते हैं कि we arise dependently. Everything else that you can see, whether we think that, oh, Nepal is independent or Bhutan is independent, that idea of independent is a political construct. Experientially, there are no borders out in the nature. This idea of nationalism is also no different from tribalism, as J. and Krishnamurti says. ये तो लोगों का construct है, but we dependently co-arise. When there is a suffering in one part of the world, instantaneously it also affects the other part of the world. Just the example of, देखिए फिजिकली सेंस में भी देखिए जो वार हो रहा है रशिया और यूक्रेन के उससे सारा दुनिया का हम Norway, which is so-called the richest nation, also oil prices, the petrol prices has gone up, food prices has gone up, many things. It is really shaken the economy of even the rich nation. And I can imagine, I was in Malawi in May. Farmer cannot buy fertilizer so much because the price has gone up because of this war. You see, war is happening in the Western Europe, and who is suffering is those poor farmers in Malawi. So we dependently co-arise in this world in very many different levels. Okay, not only, of course, when at a very personal level,
this clash, karma, vipak, and again clash, karma, vipak, that cycle continue. But at higher level also, it is, we dependently co-arise here. And therefore, we need to look for some kind of universal equity, and that is the transformative pathway for us. So even today, this big power, I mean, there is also big downfall of so-called this superpower world order. There, our Eastern wisdom tradition is being spread around the world. हमारी जो पूर्व की जो ज्ञान है, जो in forms of yoga, in forms of Ayurveda, in forms of many other transformative insights, they have come to Western Europe and they are the one marketing today. Yoga tradition that comes from the Indian subcontinent, Nepal, so-called political Nepal, India today. I mean, Gorakhnath type of yoga, Patanjali type of yoga, different kind of yoga comes from our part of the world. But now you see even the Prime Minister of Canada, he's doing yoga. Other like Obama is influenced by yoga, the Prime Minister of New Zealand and many others. So we are asking the West that, look, life is really simple. We have made very complicated because of our clinging, grasping, and also being very selfish and not recognizing that everybody has some essence, that is what we call in Brahma Kumari soul. And then in the Bhagavad Gita, chapter 13, when you recognize other people as also another soul, another soul, another soul, another soul, then how a one soul can want to destroy the other soul? That's why in the Bhagavad Gita, chapter 13, it says that samam sarvesu bhutesu tishtantam parameswaram vinashasya vinashatva ya pasati sa pasati samam pasyanti sarvatra samavastitah iswaram nainasya atma atmanam tatho yati param gatim. Those who knows that the highest Lord abiding equal in all being, not dying when they die. With this understanding, one is not able to hurt to the self by means of self. With that one understanding, one can find the highest way. Simple. And as the Brahma Kumari teaches, I am a soul. That is the most simple thing, but people do not take that one. And also when I go to Brahma Kumari, every time मैं बहुत भिखारी लोगों से बहुत ज्यादा काम करता हूँ. मेरा जिंदगी के आसपास भी बहुत भिखारी लोग हैं, यूरोप में भी, बाहर भी, अंदर भी. जब भी वहां जाता हूँ एक म्यूजिक सुनाई पड़ता है मेरे को. That music itself gives me a kind of healing. You see, that is experience if you attend to that one. And therefore the Confucius say that when music and courtesy are better understood and appreciated, then there will be no war. Okay. So also from the Eastern wisdom tradition, by letting go, it all gets done. And therefore, now in those people who have agency power are also thinking that, like for example, Gustav Speth, he was a very high cert in the UN system once upon a time. He writes somewhere that I used to think the top environmental problem that I described were biodiversity loss, ecosystem collapse, and climate change. I thought with 30 years of good science, we could address those problems, but I was wrong. The top environmental problem are selfishness, greed, जो हम 5 विकार कहते हैं, apathy. And to deal with this, we need a spiritual and cultural transformation. And we scientists, including me, don't know how to do that yet. Therefore, what I am trying now is that when I had the agency power, then I established a course in personal transformation when I was leading a beach program in conflict, peace, and development study in Nepal, also Sri Lanka, Pakistan, and Bhutan. But that requires a careful, rigorous academic kind of consideration, because we are talking about the inner dimension, our mindsets,
including our belief, value, worldview that has been created, जिसको हम संस्कार कहते हैं, that is there, and then we have to address that one, and that requires a inner transformation, and we have to put in a context of sustainability today. Otherwise, if you don't put in a context of sustainable development, nobody will allow you to bring such thing in the academia today. So what we are doing now is that the powerful unleashing of human inner potential to care, commit, and effect change for better life. We have degraded our life, and we are the responsible for that. Attahi atano natho, attahi atano gati. But now, some of these things that I've been telling, they are the event crisis. They are only a small thing up there. The hidden thing, the hidden agenda, we need to also deal in the academia, like our consumerism, our behavior, and how they have been changed over time. Also the systemic structure, like what influenced the patterns and how are the patterns related to each other, and our mostly our mental model mindset, okay, and that individual values, assumption, belief that shape our system. Okay, so I think that as an academician, we have been also taking this course in personal transformation I'm trying. Last year we have a workshop in Malawi, and then these people are also open to this transformative thinking. But then there we need to bring a lot of science, and today when you look at the scientific literature, then you see there are a lot of good work on meditation. And I work almost 1 year in Naropa University in Boulder, Colorado to study those, and I found that different style of meditation and other contemplative practices, there were more than 8,000 published work, and that provides us some basis for that one. So personal transformation requires the cultivation of transformative qualities, capacities in an individual, such as awareness of what goes inside and what goes outside, that quality. Also our ability to connect with everything else, the connection. And for that, there should be a pragyodaya, some insights, and that must have some higher purpose, to know what is my relationship with everything else, who I am, where do I come from, and what is the meaning and purpose in life. So that, if this competency framework that we call in science, this awareness, that means presence, how to cultivate a present moment awareness, to be soul conscious in the present moment, and also to acceptance, accept the thing the way they are internally when you see it, but try to, from yourself, what is your part on that one, try to understand those kind of things. So open-minded quality is required, and I trust that in old spiritual university like Brahma Kumari, it will give us to open up to the outer world and also cultivate open-mindedness. And also the connection about, it's not about to just realize that you are a soul. What is your connection with everybody else who are suffering, the compassion and the empathy? That in that front, Buddhists are doing quite well. And because of that compassion and empathy, the Dalai Lama is accepted worldwide in much more profound way than any other wisdom tradition that I can see. And also the purpose, intrinsic value orientation, and also if you have all these things, if you lack the agency, then also you cannot do it. But the organization like Brahma Kumari, having more than 10,000 centers around the world, has some soft agency, but it has to come to, again, the bigger university. So I can go on and go on. How much time I have now? Bhai Saab, Professor Saab, we are just about to finish your timing, but it's okay. You can take 5 minutes more. Sure. So I'll wrap up now. So, dear friend, if you see the emerging science about our connection, connectivity, this quantum entanglement, that we are made up of, if you go on looking at the deeper level of our reality, the particles, and you yourself, you are also engineer, and you know this quantum entanglement at very
microscopic world. But the same thing is being observed around the world when they are looking at the happiness cluster analysis, that when one friend have a happy friend, his chances of getting more happy get multiplied by 25%. And if that friend has another happy parents, that will add up. So we are very much entangled in our core of being, not only in the particle, but also at our being. So in that connection, if we do something good world, if we cultivate, and if we have a very good people that we have associated with, if we have a very good education, and if we are entangled to those mind elevating environments, then that is the transformative path. And in that connection, the meditation has a very high role. So finally, in my life, coming back to my journey when I'm coming to an end, everybody should know their self-worth, what Dadi used to teach me. I had an honor to meet, this is photo I have taken by me in Mount Abu when I was in an official mission in India. We had a project, 3 projects running that time. And she gave me one very nice laddu. एक छोटा सा लड्डू उन्होंने दिया. अभी तक उसका जो स्वाद है, जो दादी प्रकाश मणि ने मेरे दिया था, अभी तक ये है. तो वो बोल रही थी मेरे को कि देखो बेटा, तुम अपने खुद को पहचानो कि तुम कौन हो, कहाँ से आया हो. ये that is much better than getting very many other kind of material prosperity in life. But what she was really, in that very short meeting, she was telling me was that the internal sense of being worthy for progressive realization of worthy goal. So that internal sense of being worthy comes from the soul consciousness. And I used to ask the similar question to Raj Didi in Kathmandu. Every time when I visit Nepal, I also meet her. And then I was asking the similar kind of question. And the idea was the same, and it is experiential, based on their own experience, that to know who am I and how I'm connected with everything else. Where do I come from? And what is my role here? Just to go to the Western world, or even there to earn a lot of money and have a car, this, that. Is that my role here? Or I'm here for a higher purpose? That, please contemplate on my boy. Everything will be all right. So with this, I would like to really thank Brahma Kumari for giving this opportunity. My Brahma Kumari World Spiritual University and भाई साहब को मैं बहुत परमप्रीत भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ये मेरे को मौका मिला. अपने सारे जो भारतीय भाई लोग हैं, हमारे नेपाली भाई लोग हैं, हम लोग we are the brothers, we are the part of same kind of family. We share same culture and wisdom tradition, and we also respect each other. And therefore, finally, the great Mahatma Gandhi, the land of Mahatma Gandhi, where Dada Likhraj came, and then because of he put this dynamic manifestation of nature, the मातृ शक्ति को आगे रखे. मेरे को भी जब मैं उड़ीसा में था, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, वहां मैंने अपने जिंदगी के 5 साल बिताई. एंड बिकॉज ऑफ द राजयोगा मेडिटेशन, मेरा जो स्कूलिस्टिक परफॉर्मेंसेस इंडिया आने से पहले थोड़ा पुअर था, उसी मेडिटेशन के वजह से I got distinction, that is 80.02%, and therefore that opened up my other doors to become. And then for that, meditation is very important. And this what I am learning, and I trust that in the next session the sister will tell more about that, all this which is our wealth, which is inside. I am the peace, I am the love, I am the happiness, I am the knowledge, I am the power, I am the purity, and I am the bliss. With this, I thank you everybody, and Om Shanti. Om Shanti, Professor Bishal Sitaula Sahab, thank you so much, and thank you to all the lovely listeners जो यहाँ पे आए हुए हैं. आप सब ने
जो भी बाबा के बच्चे हैं यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी से रिलेटेड एंड जो नॉन बीकेज हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आप सब ने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें साइंटिफिकली, जियोपॉलिटिकली और साथ में स्पिरिचुअली कैसे भाई साहब ने कितने अच्छे से सारी चीजों को कनेक्ट कर दिया है साइंटिफिक तरीके से। उनके 32 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है साइंटिस्ट के साथ में रहना, उनसे समझना चीजों को। एंड आज भाई साहब ने ये भी बता दिया कि साइंस भी, जैसे गुस्ताव, प्रोफेसर गुस्ताव जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमारे को अंदर का ग्रीड हटाना है। हम बाकी सारी चीजें साफ करने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर से, लेकिन भाई साहब ने कितना अच्छे से बताया कि एज अ साइंटिस्ट ही रियलाइजेस कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारा जो एंजाइटी जो है, इको एंजाइटी, मेंटल एंजाइटी जो हो रही है आज, इकोनॉमिक एंजाइटी हो रही है, स्पिरिचुअलिटी उसको हेल्प करेगी सब चीजों को निकालने की। एंड ये प्लेटफॉर्म उसी चीज के लिए बना हुआ है, ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स उसी चीज के लिए बने हुए हैं। हम यहाँ पर इसलिए मिलते हैं कि हम ऐसे विद्वानों से मिलकर के इतनी अच्छी क्लैरिटी से हम समझें सारी बातों को, ताकि हम रियलाइज कर पाए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं आज। भाई साहब ने कितने साल पहले सारे एक्सपीरियंसेस करे और उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के थ्रू डिस्टिंक्शन, मेडिटेशन के थ्रू डिस्टिंक्शन पाई अपने लाइफ में। उन्होंने खुद का अपना एक्सपीरियंस बताया है, जो कि हो सकता है कि हम में से भी बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो। लेकिन आपसे सुनकर के भाई साहब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही क्लैरिटी से आपने समझाया टाइम लेकर के, थैंक यू सो मच। एंड हम आपसे और भी सुनना चाहेंगे और एक्सपीरियंसेस, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा के लिए खुला है। एंड अब हम चलेंगे आगे अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ। हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं बीके नेहा बहन, जिनको आपने लास्ट टाइम भी सुना था एंड पब्लिक डिमांड कहें या हमारे भाइयों बहनों की डिमांड कहें कि वो फिर से और सुनना चाहते थे डिप्रेशन के बारे में। तो अब हम चलेंगे बीके नेहा बहन जी के पास में। नेहा बहन जी, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड आई, कैन यू हियर मी नेहा बहन जी? जस्ट अ मिनट नेहा बहन जी, ओवर हियर। एंड बीके नेहा बहन जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन में दूंगा सो दैट वी सेव ऑन टाइम ऑल्सो। शी इज अ राजयोगी प्रैक्टिशनर फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट 13 years नाउ। एंड उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज ली है एंड अपने लाइफ में उन्होंने एप्लीकेशन करी है स्पिरिचुअल नॉलेज की। सो एज अ पर्सन हु हैज बीन अ राइटर, has written books, she has also given courses to corporates on mental peace, and साथ ही साथ उन्होंने different memory power, positive thinking, stress free life, team building, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एंड वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी उन्होंने एक नाटक भी बनाया है। और कार्यशैली में नेहा बहन जी हमेशा अपने आप को व्यस्त रखती हैं विद मेडिटेशन, विद गॉडली नॉलेज, एंड उसको कैसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अपनाना है अपने जीवन में। सो शी इज ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनली एज एन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इन अ फर्म बेस्ड इन मुंबई। एंड ये सब कुछ करते हुए भी वो कैसे मेडिटेशन को यूज करती हैं और अपने टाइम मैनेजमेंट करती हैं। थैंक यू सिस्टर, आपने आज हमारे लिए स्पेशली छुट्टी ली है सेशन में आने के लिए। दैट इज अ ग्रेट स्टेप विच यू हैव टेकन एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। एंड ऑब्वियसली आपने कहा हम्बली बहुत ही कि जैसे परमात्मा पिता ने मुझे कहा सेवा है तो छुट्टी ले लो। So thank you so much for taking that beautiful opportunity and coming amongst us. I'll, without taking any more time, Shiv Neha Bhenji, please go ahead and we'll go ahead with your session on depression and uski dawai kya hai. On to you. ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज क्लियर आ रही है जी? Om Shanti. ये हमारा सेकंड सेशन है। लास्ट सैटरडे भी हम सब मिले हुए थे और लास्ट सेशन में हमने कुछ अच्छी अच्छी बातें की थी। जैसे कुछ राइमिंग वर्ड्स भी यूज किए थे, इम्प्रेशन एंड डिप्रेशन, प्रेशर एंड प्लेजर। आज थोड़ा होने के कारण क्या है, उसकी रेमेडीज क्या है और उसके लिए दवाई क्या लेनी है, और उसके बाद में हम छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो ऑल रेडी एंड सेट। लास्ट टाइम जैसे डिप्रेशन, हम जैसे कहते हैं कि हमारे जीवन
अगर हम देखें तो कोल्ड एंड कॉफ हर एक को ही होता है, विच इज नॉर्मल। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि डिप्रेशन इज नॉर्मल, देयर इज नथिंग नॉर्मल अबाउट इट। डिप्रेशन इज जस्ट we are not able to take the pressure at that point of time. हमारा इमोशनल जो बैलेंस है वो थोड़ा हिल जाता है, अपना हमारे एक्सपेक्टेशन एक्सेप्टेंस इसका रेशियो हिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम बड़ी पहाड़ियों पर चलते हैं तो बहुत बार अप भी जाते हैं, बहुत बार डाउन भी जाते हैं। सो जब भी हम डाउन जाते हैं तो इट डजंट मीन कि वी आर नॉट गोइंग अहेड, हम लोग फिर भी आगे ही चलते हैं, खाली दिस इज अ टर्निंग अप्स एंड डाउन। तो ऐसे लाइफ में भी बहुत बार अप्स एंड डाउन आती है, कभी कभी डाउनफॉल आता है, या जब भी लो एनर्जी हमें मिलती है, बिकॉज समटाइम्स वी आर नॉट टेकिंग प्रॉपर रेस्ट। जितना हमको प्रॉपर रेस्ट चाहिए उतना हम कभी कभी रेस्ट नहीं लेते हैं, कभी कभी वी आर वेरी ओवरलोडेड विद आवर थॉट्स। तो जब ये थॉट से भी बहुत ओवरलोड हो जाते हैं तो उसको बैकअप करने का टाइम नहीं रहता है थॉट्स को। और जैसे बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे अभी हो रहा था, मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही थी, तो ऐसे ही हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड की आवाज बहुत बार सुनाई नहीं देती है। वो चिल्लाता है कि बस अभी थोड़ा आप स्टॉप हो जाओ, शांति रखो, अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, पर वो आवाज हमें नहीं आती है। तो वहां पर भी ऐसे ही हमारा इंटरनेट वीक हो जाता है, और इंटरनेट सभी भी वीक होने की वजह से हमारी जो एनर्जी पूरी है वो लो हो जाती है। तो जैसे हम रास्ते में भी बहुत बार चलते हैं, तो जब भी चलते हैं तो बहुत बड़े बड़े बम्प्स आते हैं आजकल। तो हमने देखा जैसे रेमेडीज के लिए मैंने भी बताऊंगी, तो उसमें सबसे पहली रेमेडी है बम्प। तो रास्ते में चलते हैं तो बहुत बार बम्प आते हैं बड़े बड़े, तो बम्प आते हैं तो हम क्या करते हैं, वहीं के वहीं रुक जाते हैं। बम्प अगर आता है तो हम वहां के वहां रुक जाते हैं, रात भर, पूरे दिन भर नहीं। व्हाट वी डू, We walk slowly. we walk slowly, Then we move ahead. then we move ahead. तो बम्प आ गया हमारे सबके बीच में, थोड़ा सा बम्प आया और सारा सब कुछ प्रैक्टिकल। मेरा कहना यह था कि जब भी बम्प आता है सो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम, और वो जब भी हमको लो फील ऑलरेडी होना चालू होता है, सो दैट टाइम यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट देयर इज अ बम्प इन माय लाइफ। सिचुएशन में अभी कोई प्रॉब्लम है जिसमें बम्प है, और वो बम्प में यू हैव टू जंप, वो बम्प में यू हैव टू जंप। पॉसिबल है ना? जैसे कहा ना कि बम्प आते हैं जंप आते हैं। तो ये देखो लाइव एग्जाम्पल गॉड आपको बता रहा है कि ऐसे ही जीवन में परिस्थितियां आती है। Now let's try with the sister, because I want to listen to her also. Sister, please go ahead. थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग अ पेशेंस, है ना? तो ऐसे ही जिंदगी में जब भी प्रेशर आते हैं तो डिप्रेशन आता है, लेकिन आई जस्ट शो यू कि भाई जैसे बम्प आया उसमें से जंप किया एंड नाउ आई एम डूइंग थंब, के नाउ आई एम अगेन बैक। तो परिस्थिति जब भी आती है तो परिस्थिति से हमें डरना नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि परिस्थिति बड़ी है या हम बड़े हैं, तो क्या याद रखेंगे जीवन में? बम्प, जंप एंड थंब। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था इंप्रेशन एंड डिप्रेशन, प्रेशर एंड प्लेजर। तो ऐसे आज हम 3 शब्द यहां से ले जाएंगे, बम्प, जंप एंड थंब। वी शुड चैलेंज अवर लाइफ कि भाई तुझे जितना भी एग्जाम लेना है तू ले। आई हैव सुप्रीम सोल, आई हैव माई पेरेंट्स गुड विशेस, मेरे माता पिता के आशीर्वाद है, मेरे परमात्मा के आशीर्वाद है।
सो तुम हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकोगी। बट वो आवाज हमारे अंदर से कभी आएगी when we every day think that I am powerful than a situation। जो सिचुएशन आती है उससे मैं पावरफुल हूँ। तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोल्ड हो गया आपको, फिर आपको कोल्ड में से टेंशन आया, आपको प्रेशर आया, सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ कोल्ड। उसके बाद में कोल्ड से साइनस होना और कोल्ड से निमोनिया होना, सो यू फील दैट यू आर इनटू डिप्रेशन। तो देन व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू द डॉक्टर। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कैसे हो गया, ये होता है, बहुत सारी चीजें वो पूछेगा। उसके बाद में वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा। हाँ, वो बोलेंगे ये दवाई लो, वो दवाई लो, ऐसे खाने में परहेज करो। तो मैं आज आपको 3 पील्स देना चाहती हूँ, 3 पीस। जैसे उसमें हमने 3 देखा, बम्प, झम्प एंड थम्प, ऐसे यहाँ पर फिर से हम 3 पील्स लेंगे। पहला है, वी हैव टू पिन पॉइंट अवर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हर एक को आएगी, छोटे बच्चों को भी आज प्रॉब्लम है। बट जब ये प्रॉब्लम आती है, हमें पहले पिन पॉइंट करना है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, इसका रूट कॉज क्या है। जैसे छोटा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, अगर हम ऑफिस में जैसे हम काम करते हैं, तो बहुत बार हमारे पास अच्छी आइडियाज होती है, लेकिन वो आइडियाज मैनेजमेंट सुनना नहीं चाहती। तो तभी हमें ऐसे लगता है बहुत बार कि व्हाई आई शुड ब्रिंग न्यू आइडियाज। बट हमें वो आइडिया, जब भी मैं वो सोचती हूँ, सो देन आई फील वेरी लो एनर्जी, कि अरे मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, तो व्हाई आई शुड मेरा दिमाग लगाकर मैं नई नई चीजें क्यों मीटिंग में बोलूँ, इट्स बेटर आई कीप क्वाइट। बट नहीं, आई एम मेड फॉर व्हाट, फॉर डूइंग गुड क्रिएशंस इन लाइफ। और अगर उससे ऐसे लग रहा है कि बॉस मेरी नहीं सुनता है, मुझे प्रेशर आ रहा है, टेंशन हो रहा है, तो मैं उसको आइडेंटिफाई करूं कि मेरी प्रॉब्लम क्या हो रही है, कि बॉस इज नॉट लिसनिंग टू मी, अदर्स आर नॉट लिसनिंग टू मी। तभी आई हैव टू से कि भाई एटलीस्ट यू लिसन टू मी। आपको आइडिया पसंद नहीं आया, नो प्रॉब्लम, बट व्हेन मैंने इतनी पढ़ाई की है, आई हैव सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लाइफ, एंड ऑन दैट बेसिस आई एम टेलिंग यू दिस। सो एक बार आप सुन लीजिए। तो जब भी हमारी ये प्रॉब्लम पिन पॉइंट हो जाएगी, तो इमीडिएटली उसके बाद में हमें पता है कि वी हैव टू पंप अप, वी हैव टू पंप अप अवर एनर्जी। तो मैंने क्या कहा, जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई, मेरे को मीटिंग में खराब लगा, सो आई वाज डिप्रेस्ड, मेरे को टेंशन आया, मेरे को प्रेशर आया। तो मैंने बाद में उसको पिन पॉइंट किया प्रॉब्लम को, कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाई आई गॉट टेंशन। देन आई पंप्ड अप माई सेल्फ, और पंप्ड अप करके मैंने बॉस को बोला कि मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है, आई एम एजुकेटेड, इतने साल से कंपनी में काम कर रही हूँ, कुछ सुनो। सो फर्स्ट पी इज पिन पॉइंटिंग प्रॉब्लम, सेकेंड इज पंप अप योर एनर्जी, पंप अप गुड थॉट्स। थोड़ी देर के लिए जस्ट काउंट 10 to 1, उल्टा, नॉट सीधा। सीधा काउंट करोगे तो हमारा माइंड उसमें जाता है। व्हेन यू ट्राई टू काउंट, जैसे अभी सब हम काउंट करेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. When you count 1 to 10, your mind goes there. But when you count reverse way, you are able to focus. So this is a very easy remedy. So पहला एक P हो गया, second P, and then third P is problem solving. Right?
आपको पता पड़ गया पिन पॉइंटिंग प्रॉब्लम क्या थी, उसके बाद में यू पंप्ड अप कि आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे आपकी एनर्जी को आपको गैदर करना है, एंड देन इमीडिएटली यू आर एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो लाइफ इजी है कि डिफिकल्ट है? यस सर, इजी है। सर नॉट एबल टू हियर Sir, यू। kindly unmute yourself. या इजी है। बम्प जंप एंड थंब जो पहले आपने बताई वो भी एक एक सेंटेंस में बताइए तो अभी बहुत क्लियर सुनाई दे रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। Nice. बम्प में मैंने ऐसे बताया था कि जैसे हम रास्ते में जाते हैं तो बड़े बड़े बम्प आते हैं ना। हाँ हाँ, तो अगर जो कार से जा रहा है वो भी स्लो ड्राइव करेगा और वो आराम से जाएगा, और जो चल के जाने वाले हैं वो भी बोलेगा ना कि इधर बम्प है भाई संभालो। सो दिस इज अ बम्प। सो बम्प इज अ सिचुएशन व्हाट इज कमिंग इन अवर लाइफ। जैसे हमारी लाइफ ऐसे स्ट्रेट चल रही है, इतनी अच्छी जिंदगी चली, जैसे दिवाली में बहुत मजा किया हमने, नेक्स्ट डे ऑफिस गए तो बम्प आया, बड़ा बम्प आया, बॉस की इतनी फायरिंग मिली, तुमने ये काम ठीक नहीं किया, इसको गिफ्ट नहीं पहुंचा, इसको ये नहीं पहुंचा, तो ये बम्प आया। लेकिन हमने क्या किया, वो बम्प को भगवान को दे दिया कि ये आप संभालो, है ना, और हमने जंप कर लिया। सो कहते हैं कि जब भी परिस्थिति आती है, अगर हम उसको अपने पास रख लेते हैं तो वो तो रह जाएगी ना। आप देखो किसी के घर में आप जाओगे, हाँ कि चलो आज हम मेरी बहन के घर पे जाती हूँ, तो बहन के घर आप जाओगे तो बहन आपको पानी देगी, फिर चाय देगी, अच्छा खाना खिलाएगी, और फिर बाद में अगर वो बहुत ऐसे ही आपको करती रहेगी तो आपको क्या लगेगा, चलो यार इधर ही बैठ जाते हैं, चलो बहन को बोलेंगे आप कि हम कल जाते हैं घर, फिर कल वापस वो अच्छा अच्छा पकाकर आपको खिलाएगी, तो आपको लगता है कि अरे और एक दिन रुक जाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा हमें कहते हैं कि सिचुएशन आएगी मेहमान बनकर, और वो मेहमान कितने दिन अच्छे लगते हैं हमारे घर में, आप सबको भी कितने दिन मेहमान अच्छे लगेंगे? एक दिन, मैक्सिमम 2 दिन। हाँ, 2 साल 5 साल 10 साल आप मेहमान को रखोगे, कोई नहीं रखेगा। तो सिचुएशन भी एक ऐसे अतिथि की जैसे आती है, और उसको हमें थोड़ा थोड़ा चाय पानी पिलाकर उसको भेज देना है। अगर आप बहुत अच्छे 56 भोग उसको देते रहेंगे ना, तो वो बैठ जाएगी। किसको नहीं अच्छा लगेगा, हाथ में आप सब खाना दोगे तो हु विल नॉट लाइक, कौन घर जाना चाहेगा, फिर कोई सोचेगा यहीं रहते हैं। तो ये हमारे इसमें जंप करना है, एंड देन थम, क्योंकि लाइफ तो हमारी इजी हो गई जब ये प्रॉब्लम को आपने समझ लिया, उसके ऊपर से आपने जंप कर लिया, तो लाइफ इज अगेन ब्यूटीफुल। और 3 पील्स मैंने आपको बताई, क्या बताई? 3 पील्स, पेन पॉइंट, प्रॉब्लम, देन पंप अप, पंप करो, एंड प्रॉब्लम सॉल्व। इजी है ना? सो कितने लोग कहते हैं लाइफ इज इजी, सिचुएशंस आर इजी टू डील विथ? So we can say, sister, that first find out what is actually the problem. That is something kind of samasya darshan. समस्या क्या है? समस्या दर्शन, जैसे भागवत गीता का भी पहला ही समस्या दर्शन है उसमें। जी। And then the second one is that find the skillful means. That is what is your pump up, pumping. Yeah. जैसे साइकिल में हवा भरते हैं ना, we do that, you know, तब साइकिल में जब भी हवा भरते हैं तो पंप करना पड़ता है हमें, पंप अप। And here you need a lot of in order to get that energy and thoughts, you need to also have an interaction with the learned people who have the solution. Learned, because see, sometimes solutions are nearby only, आपके इधर ही है, बट आप उनको कभी कभी आपके अंदर ही है, आपको भी पता है कि ये सिचुएशन का यही सॉल्यूशन है, बट यू आर लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इसीलिए आपको लगता है कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है। देखो हम जब भी बचपन में छोटे थे, हमारे घर में हमारी जो दादियाँ थी, जो ग्रैंड पेरेंट्स, कितनी छोटी छोटी दवाओं से हमें ठीक कर देते थे,
है ना, क्योंकि दे वर कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई ये देने से ये बच्चा रातों रात ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर भी पावर है, ठीक है। अभी एक हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम सुप्रीम पावर से पावर लेंगे एंड वी विल फील दैट सुप्रीम पावर इज ऑलवेज देयर, है ना। कितने लोग बोलते हैं भगवान बहुत ऊपर है? कहाँ है भगवान? बहुत दूर है? कहाँ है भगवान? आई विल से कि परमात्मा इधर ही है, जस्ट 1 फुट अप, 1 फुट। खाली हमें उसको फील करना है ना। तो अभी जैसे सब लोग तेल मालिश करते हैं ना, हम लोग तेल मालिश सब करते हैं। तो व्हाट वी विल ट्राई टू डू, हमारी ये जो एनर्जी है, जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था कि अवर बॉडी हैज लॉट ऑफ एनर्जी, तो हम इसको रब करेंगे जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। और ये रब करने के बाद में यू फील दिस एनर्जी हियर, सी यू जस्ट एकाग्र होके जस्ट फील दिस एनर्जी, है ना। एंड कोई ऐसा मालिश करता है ना, ऐसे जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज एंड ट्राई टू डू दिस एक्शंस। देखो ऐसे लगेगा कि देयर इज समथिंग इज कमिंग, आपका सडन योर एनर्जी लेवल विल चेंज। तो ऐसे ही हम 2 हाथ ऊपर कर कर जब परमात्मा से एनर्जी लेते हैं और यहाँ पर जब ये करेंगे तो कहते हैं ना परमात्मा हमारी तेल मालिश कर रहा है। सो ही इज सेइंग कि अरे बेटा हैव पीस, यू फुल ऑफ लव, है ना, हैव पावर, है ना, हैव माय ब्लिस। तो जैसे क्रिकेट के मैदान में हम देखते हैं, इवन आई रिमेम्बर कि are you all feeling that energy when you are doing it here? Yes, 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 sister. अच्छा लग yes. रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। Some हाँ, presence. तो जब भी प्रॉब्लम आए ना, जस्ट डू दिस कि भगवान मेरा मसाज कर रहा है एंड ही इज गिविंग मी द पावर, है ना। जब भी हम कॉलेज में थे, क्रिकेट देखने जाते थे तो एक छतरी आती थी, इफ यू अभी भी मिलती है। सो क्रिकेट में बहुत लोग ऐसा वो छाता ऐसे पहन के बैठते थे। तो ऑलवेज फील दैट अम्ब्रेला ऑफ द गॉड इज ऑन यू। इजी है ना कि जब भी गॉड की अम्ब्रेला यहाँ पर है तो कोई भी चीज हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, कोई भी चीज हमें प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती है, ठीक है। आई थिंक ब्रदर टाइम है अपने पास। Sister, you want to play that music? आप कराना चाहते थे? या We उसके have. पहले 2 शब्द। हाँ Yeah, we'll take some time more because I think everybody is over here. हमारे 22, 23 participants हैं, they're all over here because आपका बीच में gap हो गया था. So let's go ahead and आप हाँ cover up करेंगे यहाँ पर अच्छे से and या आप song जब चाहेंगे मैं उस समय song on कर दूंगा मैं. ओके या। तो जैसे कहा गया है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, राइट। क्योंकि देखो हम हमारे बच्चों को भी क्या सिखाते हैं, क्या संस्कार देते हैं, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। हम वो नहीं बोलते सच बोलो, बड़ों को रिस्पेक्ट दो, है ना, खुद का काम खुद करो। तो जैसे हमको जो सोच दी जाती है हमारे पेरेंट्स से, हम वैसे बनते हैं और जैसा हम सोचेंगे वैसे हम बनेंगे। तो उसके लिए हमें हमारी सोच को बदलना है। जैसे कोई छोटे बच्चे को आप देखो, और जैसे हमारा कहते हैं ना कि हमारा माइंड भी एक छोटे बच्चे के जैसा है। छोटे बच्चे के हाथ में अगर चाकू है और आप उसको कहोगे कि बच्चा चाकू फेंक दे लग जाएगा, तो वो फेंकेगा? तुरंत नहीं फेंकेगा। स्मार्ट पेरेंट्स क्या करेंगे, वो चाकू के साथ में उसको एक टेडी बेयर ला के दे देंगे। तो जैसे टेडी बेयर आएगा तो वो क्या करेगा, चाकू को ऑटोमेटिकली नीचे फेंक देगा। तो ऐसे ही हमारा माइंड भी एक बच्चा है, रोज चाकू लेके खड़ा रहता है। वो चाकू कौन सा है? नेगेटिव थॉट से, वेस्ट थॉट से,
चिंता, फियर, है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब चाकू वो लेके खड़ा होता है। और उसमें हमें क्या करना है, पॉजिटिव थॉट, उस टेडी बेयर को लाना है। और वो हमारे टेडी बेयर कहाँ से आएगा, हमारी सोच से आएगा। सो एक नेगेटिव थॉट के ऊपर हमको पॉजिटिव थॉट रखना है, आई एम अ पीसफुल सोल। दूसरा नेगेटिव आया, उसके ऊपर आई एम अ पावरफुल सोल। तीसरा आया, आई एम अ लवफुल सोल। तो जब भी हम हमारी सोच को रिप्लेस करेंगे, चेक एंड चेंज जब भी हम करेंगे, चेक चेंज, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो जीवन है जैसे हमें चाहिए, हमारी चॉइस से हम जी सकेंगे। चेक, चेंज एंड चॉइस, है ना। तो इसके लिए एक गाना अभी भाई साहब बजाएंगे, उस पे हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, इट्स अ म्यूजिकल एक्सरसाइज, जस्ट बिकॉज के भाई रैप अप सेशन है तो हम अच्छे से उसको रैप अप करें। और जब भी वो आप करो तभी वो गाने के बोल भी आप समझिए कि वो क्या कहता है, क्या बोल उसके है, और वो समझकर उसके साथ में वो एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है, ऑल आर रेडी? आप सब वीडियो ऑन करोगे तो और भी अच्छा है, सो दैट वी नो कि यू पीपल आर डूइंग इट करेक्टली, एंड नहीं किया तो भी अच्छा है, इट इज ऑल योर चॉइस। ओके भाई साहब, तो गाना बजाएंगे, जैसे मैं करूंगी आप करोगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।
लवली सिस्टर, लवली, Thank you हल्के हो so गए? much. हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है ना, कितना चार्ज हो गए सब, है ना। तो जब भी परिस्थिति आए, कोई भी एक गाना लगा दो एंड डांस, परिस्थिति आपकी पूरी गायब हो जाएगी। बिकॉज जब भी आप डांस करते हो ना, आपकी पूरी एनर्जी नीचे से लेकर ऊपर तक आती है, एंड जब भी वो एनर्जी यहाँ पर जमा हो जाती है, तो यहाँ पर बैठी हुई जो सुप्रीम पावर है, वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो आज से नो रोना नो धोना, ओनली नाचना और गाना। हाँ, तो परिस्थितियों को बाय बाय करेंगे। ओके, ओम शांति। ओम शांति। Thank you all of you Thank you so for much. joining and listening to me with Thank lot you of so much, hurdles. Didi. थैंक यू सो मच सिस्टर नेहा एंड भाई साहब, आप दोनों ने जो आज समझाया हमें, भाई साहब ने भी बोला था कि अगर आज म्यूजिक हम अपनी लाइफ में ले आए, उन्होंने एक कोट दिखाया था कि म्यूजिक को भी अगर लाइफ में ले आए हैं तो कैसे हमारी लाइफ चेंज होती है। और बात बहुत सिंपल है, आपने आज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम सिखाई हमें सिस्टर, कि न्यूरॉन्स को कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू। एंड ये बहुत ही साइंटिफिक चीजें हैं जो कि आज हम बहुत ही सहज तरीके से भारतीय संस्कृति में करते आए हैं, नाच गाना फेस्टिविटीज, ताकि उमंग उत्साह बढ़ा रहे हमारा और हम हमेशा के लिए खुश रहें, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको हम पार कर जाएं बहुत सिंपलिसिटी से। सो आप दोनों के मिश्रण से आज साइंस और मेडिटेशन, सॉन्ग भी एक मेडिटेशन है। थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने इतने प्यारे तरीके से आज हमें मेडिटेशन कराई है एंड फीलिंग्स के साथ में कराई है आपने आज हमें मेडिटेशन। ब्रह्मा कुमारीज में हम मेडिटेशन जो करते हैं वो विद सॉन्ग्स करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की भावनाएं जो मर चुकी होती हैं ताकि वो जागृत हो जाए। फिर कभी कभी हम करते हैं साइलेंस में मेडिटेशन, जब हमें सॉन्ग्स की जरूरत नहीं होती है, हम बहुत ही हाई ज़ील एंड एंथुसियाज्म में होते हैं, तो हम बिल्कुल साइलेंस में जाके मेडिटेशन करते हैं। तो आज का ये मेडिटेशन सत्र, आप जो नए लोग आए उनको समझ आया नहीं आया, लेकिन एक प्रकार से एक मेडिटेशन ही थी। थैंक यू सो मच सिस्टर नेहा। एंड थंब, बम्प एंड जंप। Thumb. अच्छा, Bump, बम्प, jump and thumb. ओके, थैंक यू सो मच। एंड आपने जैसे लास्ट टाइम हमें प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड करी थी, जो लिसनर्स हैं यहाँ पर, अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको मैं यहाँ पर आपको लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप का, जिसमें कि आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने ज्वाइन किया है बहुत ही अच्छी बात है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो अभी तक, वो आकर के ज्वाइन कर लें। एंड भाई साहब, आपकी प्रेजेंटेशन वाज ब्यूटीफुल, प्रोफेसर साहब, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, वेरी वेल मेड, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। एंड हम ट्राई करते हैं, अगर हमारे जो यहाँ पे श्रोता आए हैं अगर वो सुनना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, तो हम एक ग्रुप बनाया हुआ है हमने व्हाट्सएप का, जिसमें कि वो ज्वाइन कर सकते हैं और आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि आज वो पूछ नहीं पाए आपसे। उसमें आपसे अगर प्रेजेंटेशन लेना चाहें तो आपकी प्रेजेंटेशन हो सकती है। सिस्टर नेहा ने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन पिछले सेशन की हमें भेज दी है। थैंक यू सो मच सिस्टर। एंड आपको हाँ जाते जी, जाते एक बात मैं और बताना चाहूंगी, हाँ जी जो प्लीज। लास्ट टाइम मैंने बताया था, ये मेरी बुक है, हाँ जी, और ये बुक में मेरा एक ये कोट है, फॉरगेट हाउ। तो मैं उसमें से थोड़ा सा एक पढ़ना चाहूंगी। हाँ जी प्लीज। फॉरगेट हाउ एंड एंजॉय वाओ, स्टार्ट नाउ। सो यू विल स्टार्ट ना, फॉरगेट हाउ, आओ, enjoy wow, एंजॉय wow वाओ। and start now. तो उसका मैं जस्ट पंच लाइन्स आपको बताऊंगी। दिस इज द फुल थिंग आई हैव रिटन। Are you all ready to say always wow? Check yourself. है ना, कहते हैं ना, परिस्थिति आती है ना तो बोलना चाहिए वाओ। तुम्हारे पास क्यों आई? बिकॉज यू हैव दैट पावर टू फाइट। वाओ, welcome, all are not in favor. Let's start now, enjoy wow and forget how. Let's start now, enjoy wow and forget how. पहले हमने क्या किया? Forget how, say wow and start now. बट जब ये मैंने पढ़ा तो रिवर्स हो गया, राइट? सो ऐसे ही हमारे जीवन में छोटे छोटे शब्द का प्रयोग करके हम उड़ते रहते हैं। ठीक है, एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग पेज, इफ यू वांट आई कैन रीड इट, but I mean already 6:30 होने आई है। If you want I can read the full page, जिसका अभी मैंने आपको कुछ शब्द में बताया।
So Bhaiji, आप if you permit, I will read it. Yeah, please sister, please go ahead. हाँ, ठीक है. इसमें लिखा है, this was the picture. I think you are all able to see, right? इसमें लिखा गया है कि life journey is very beautiful. If you see from the zero borderline, then you will see life is a blank scratch paper, and you can draw beautiful and colorful picture of the life. Reading these lines, definitely there is a wondering sound from within how to do. And then it will bring many other questions. Let's forget the how just now and take this as an opportunity as wow. As it is so creative to image life as a blank paper, and I can paint my life with colors of my own choice. From start, and definitely I will paint it as per my own choice to enjoy life without thinking of others. है ना? So it means कि अगर plain paper दिया जाए तो how you will choose your life. Once you decide to do so, then there are many ideas will start coming up in mind, just like a fountain. And you just say to yourself, starting now, because ideas aane lagi na, so starting now. And the same moment, all cosmic energy of environment and soul will definitely pour their colors to paint your new sketch of life. Thus, inner journey of soul will start, and one can forget how, enjoy wow, start now. Remember that life is a challenge with new opportunities every day, with new sparkling stars and shining sun, and we have to adapt always the acceptance of challenges and convert them into changing status of learning to grow using the path of how. Handling to overcome worries. How का definition फिर लिखा है. How means handling to overcome worries. Wow means whatever odd is winning. Okay. Wow means whatever odd is winning, and I am starting now. It means new opening of wonderful journey. How nice. So I Beautiful. gave another definition. Wow, how means handling to overcome worries. Wow means whatever odd is winning, and I am starting now means new opening of wonderful journey. Om Shanti. Thank you very much. Om Shanti sister. And बहुत सारे meeting chats में comments भी आ रहे हैं. Professor Vishal ji shared so many things which needs more churning and contemplation. It would be very nice if sir takes few sessions more on the same topic. Sir, आपने बहुत ही डीप चीजें बताई. टाइम कम लगा, मुझे ऐसा लगा, लेकिन आपसे बहुत सारी चीजें और सीखनी आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमें. And sister Neha and आपका combination is wow. So it's going very wonderful. बहुत बढ़िया चल रहा है. And I hope we can see you in another session. आप जब भी होंगे हमारे ग्रुप में आप प्लीज बताइएगा. Whenever you're ready, we'll be ready for you. Thank you so much. मेरे पास में भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इस सेशन में क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है मैं ले नहीं पाऊंगा. सर से क्वेश्चंस पूछने थे मेरे को, लेकिन टाइम की पाबंदी के कारण अब हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं. एंड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको व्हाट्सएप का लिंक भेज दिया है. काइंडली ज्वाइन द ग्रुप राइट नाउ. आपको चैट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक चला गया है. काइंडली ज्वाइन द ग्रुप फॉर गेटिंग मोर डिटेल्स. एंड सर भी वहां पे कनेक्टेड रहेंगे. यू कैन टॉक टू हिम पर्सनली इन दैट ग्रुप and you can ask him any questions over there and we'll be ready for the next session. Thank you so much आज सबके आने के लिए. And sir, आपकी बुक के बारे में हमने ज्यादा चर्चा नहीं करी. नेक्स्ट सेशन में जरूर हम चर्चा करेंगे. We would love to listen something from that book from you too. And आज हमारे साथ में तिवारी सर को मैं ढूंढ रहा हूँ. तिवारी सर शायद से आए हैं कि नहीं आए, उनसे हम कविता सुनना चाह रहे थे.
समय की कमी हो चुकी है, लेकिन तिवारी सर, आर यू देयर समवेयर? मनीष तिवारी सर, आर यू देयर समवेयर? अगर आप हैं तो आपसे कविता सुननी थी। सर शायद से नहीं है, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम। Anyways, in the next session we'll see you again. Thank you so much, sir, for coming over. Sister, thank you so much for coming over. Om Shanti to all of you. And इसकी Thank you so recording much. तो Om Shanti. Thank you, Om Shanti. Shanti. And I must say that it was a very memorable experience for me to at least. I think the sister, when I can feel her presence here, and that is a noble thing for me. lovely. And sister, please also, because you have I think a better access to Baba than I have, because I am surrounded by Bikari people. So I am throughout my journey in Norway last 35 years, but now first time in my life a very new thing like Eastern philosophy in international relation. The university has given me that kind of things, and I feel like I have to jump into the water without swimming, without knowing swimming beforehand. And I need your really a kind of prayer and blessing, and I trust that. And I can also see that my beloved friend from Nepal, Dr. Binod Bhattasar, is also here. I want to salute him because he is also my another guru. And thank you very much, Bhai Sahib. It was a very nice, a very elevating experience for me. Being in Norway, now the winter and long winter days and dark days and snow are coming. So I love to interact with you guys more and more. Thank you. Thank you so much, sir. And हमारे समक्ष रेखा अग्रवाल दीदी जी भी हैं। मैं आपको बोलने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन रेखा अग्रवाल दीदी जी को हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप प्लीज ज्वाइन करें। एंड उन्होंने 4th स्टेज कैंसर एंड बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाया है थ्रू मेडिटेशन। थैंक यू दीदी, आप गुप्त रूप में ज्वाइन करी हुई हैं, मैं देख सकता हूँ। सो आप प्लीज नेक्स्ट सेशंस में जरूर रहिएगा, अपना अनुभव समझाइएगा कैसे मेडिटेशन से आप इन चीजों से 25 years a living cancer patient, कैन यू इमेजिन? सो आप ये चीजें शेयर करें नेक्स्ट सेशन में आकर के। आपसे रिक्वेस्ट है रेखा दीदी, अगर आप सुन रहे हैं इस चीजों को। थैंक यू सो मच। ओम शांति टू ऑल ऑफ यू। वी आर Om साइनिंग ऑफ। Shanti. Om Shanti. Om Shanti.